Hi friends, today we can see about ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स. ओके, आज हमें ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म के बारे में देखेंगे. यानी कि देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स. फॉर एग्जांपल यू कैन से अमेज़ॉन. इट्स a very major big platform for selling a wide variety. ओके, एंड ईबे जैसे प्लेटफॉर्म में आप बहुत न्यू एंड वो यूज्ड गुड्स भी बेच सकते हैं. Etsy is considered as a premier site. You can sell handmade items, handicraft items, vintage goods and craft supplies. Okay, like this there are a lot of Bonanza, Postmark, Flipkart. Same in the same method there is another one website called Gumroad. For example, you can see about Gumroad today. See in Gumroad, आज ये Gumroad में हम डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं. यू कैन सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स एंड यू कैन सेल 2 आइटम्स विथ सिंगल प्राइस, दैट इज बंडल आइटम्स. ओके, यू कैन सेल दिस डिजिटल आइटम्स इन दिस Gumroad प्लेटफॉर्म्स. नो नीड एनी जीएसटी की ज़रूरत नहीं. और आप विदाउट जीएसटी वी कैन आल्सो सेल इन दिस Gumroad. और इसमें आपको पेपल अकाउंट पूछेगा या डायरेक्ट बैंक अकाउंट भी पूछेगा. तुम 2 अकाउंट में कौन सा अकाउंट आपको पैसा आना चाहिए वो हम इसमें रजिस्टर कर सकते हैं. ओके, सेम वे यू कैन क्लिक द स्टार्ट सेलिंग बटन हियर एंड यू कैन क्रिएट ए अकाउंट. बिफोर क्रिएटिंग अकाउंट you go through the website policies. Okay, you can log in through your Facebook, or also you can go log in through your Google or Twitter or Stripe, or else you can create a new account. To create a new account you can see later. Okay, first you need a email address and a password. और इस पे अकाउंट कैसा क्रिएट करना और लिस्टिंग कैसा क्रिएट करना और प्राइसिंग कैसा करना वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा. ओके, नो फर्स्ट ये बेसिक डिटेल्स ऑफ Gumroad है. ओके, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.